अज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मोहम्मद नायाब रज़ा बुखारी। और आज हम फिजियोथेरेपी टेक्निक्स जो है पार्ट 1 का उसका ह्यूमन लोकोमोशन के बारे में पढ़ेंगे। इट मीन कि गेट के बारे में पढ़ेंगे। गेट आर दी ह्यूमन लोकोमोशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन फिजियोथेरेपी। दिस चैप्टर इंट्रोड्यूस द साइकिल पैथोलॉजिकल गेट पैटर्न एंड द गेट ट्रेनिंग, आल्सो डिस्क्राइब आउट द ट्रांसफर ऑफ टेक्निक्स। या हम ट्रांसफर टेक्निक्स के बारे में भी हम इसको जो है वो पढ़ेंगे। अच्छा, इसके इसमें जो हमारे पास कंसेप्ट है, डिटेलिंग है। सबसे पहले हमें डेफिनेशन और गेट साइकिल का पता होना चाहिए। ह्यूमन गेट रेफर एज ए लोकोमोशन अचीव थ्रू द मूवमेंट ऑफ द ह्यूमन लिम्ब। ह्यूमन गेट इज डिफाइंड एज द बाइपीडियल बाइफेसिक फॉरवर्ड propulsion of the center of the gravity the human body, in which there are alternate sinus movement different segment of the body which leads expenditures of the energies एनर्जी का यूज करके प्रोपोर्शनली मूवमेंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी का परपोर्ट करना, बॉडी को लोकोमेट करना, आगे की तरफ बढ़ाना, उसको हम नाम देते हैं, गेट साइकिल का नाम देते हैं। When walking, one foot is always contact with the ground. There is a brief period of the double sport during the gait cycle. When the both feet are intact in the ground, the limb move in the diagonal reciprocal pattern. अच्छा, अब गेट साइकिल क्या होता है? ये बाकी सारी चीज़ें इसमें वही एक्सप्लेन हुई हैं, तो अब हम सबसे पहले गेट साइकिल के बारे में देखते हैं कि क्या होता है। Gait cycle is a repetitive pattern involving the step and the steroid and these steroids. A step is one single step. A steroid is whole gravity cycle. Gait cycle उसको हम स्ट्राइड का नाम देते हैं। द स्टेप टाइम इज द टाइम टू वन ऑफ फुट हिटिंग टू द फ्लोर एंड द अदर फुट हिटिंग टू द फ्लोर। स्टेप टाइम क्या है? एक आपका फुट हिट करता है फ्लोर को, उसके बाद वो रेस्टिंग में जाता है, तो दूसरा आपका जो हिट करता है फ्लोर को, उसके दरमियान का जो टाइम है उसको हम स्टेप टाइमिंग का नाम देते हैं। स्टेप कैन बी डिस्क्राइब एज द मेडियोलेटरल स्पेसेस बिटवीन द टू फीट। मीडियोलेटरल स्पेसेस अगर दो फीट के दरमियान हो तो उसको हम विड्थ का नाम देते हैं। Classification of the gait cycle involves the two main phases. The stance phase is the swing phase. Stance को हम swing phase का नाम देते हैं. The stance phase occupies 60% of the gait cycle, while the swing phase is occupied the 40% of it. Gait involves the combination of the open and the closed chain. ओपन एंड क्लोज चेन के अंदर जो है वो गेट इसका होता है। Effect of the goat posture values in the different body function. The effect of the posture include सॉरी, इसमें अब आपका ये आ जाएगा स्टांस फेस। Begin with the heel strike. This is the moment when the heel begin to the too much the ground, but the toe is not yet to touch. In the mid stance phases, you can seize the settlement of the foot and the lateral border during the chance of the mid stance to toe off and the five metacarpal phalanges contract. The toe off phase is also named the propulsive phases. इसको हम propulsive phases का नाम देते हैं। Swing phases. When the stance phases and the swing phase begin, the phase is the phase between the toe off phase and the heel strike phase। जहाँ पे heel strike हो रही होती है और आपकी toe off हो रही होती है, उस phase को हम swing phase का नाम देते हैं। In this swing phase, we can recognize the two extra phases, acceleration and the declarations. The acceleration phases goes from the toe off to mid swing, while the declarations goes from the midways of the heel strike. In this acceleration phase, the swing leg make an accelerated forward movement ball to the proper propulative swing phase. Occur in this phase, both feet under the body.
with the heel next to each other. A more detailed classification of the gait recognized in the six ways, जिसमें आपका फुट फ्लैट, मिड स्टांस, हील ऑफ, टो ऑफ एंड मिड स्टेक आ जाते हैं। हील स्ट्राइक क्या होती है? हील स्ट्राइक आल्सो नोन एज द इनिशियल कॉन्टैक्ट शॉर्ट पीरियड बिगिन टू द movement of feet touches and the ground of the first phase is to the double spot. A foot flat in flat foot loading response face the body absorb the impact of the foot by the rolling by the pronation. Mid stance in mid stance hip move from the 10% of flexation, extension and the contraction of the gluteus medius muscles. Heel off. Heel off begin when the heel leaves the floor. In this phase, the body weight is divided over the metatarsal heel. Toe off. In toe off, like the name says, the toe leaves and the ground. Mid swing, the mid swing phase help to the flexion 30%, 30 degree, and the ankle become the dorsiflexion due to the contraction of the tibialis and tibial muscles. The knees flexes about the 60% extend and approximately 30 due to the contraction of the sartorius muscles. This extension is caused by the quadriceps muscles. इसको हम quadriceps muscles का भी नाम देते हैं। तो ये हमारे पास जो है आ जाती है इसमें। तो आज के लिए हमारा इतना ही काफ़ी है। कल इंशाल्लाह हम इससे अगला पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।